Hello everyone, myself Devkan Sharma, Associate Professor Jyoti Devilal College of Pharmacy, Jagadri. Today our topic of discussion is calibration of instruments in pharmaceutical industry. Let's go through it. Now calibration. First of all, we should know about the calibration. What is calibration and what is the calibration of an instrument? Calibration of an instrument is the process of determining its accuracy. कैलिब्रेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी को डिटरमाइन करते हैं। और इस एक्यूरेसी को कैसे डिटरमाइन करते हैं? किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो रीडिंग्स होती है उसकी रीडिंग को हम मेजर करते हैं एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट से, जिसे हम स्टैंडर्ड भी बोल देते हैं। ठीक है। नाउ the process involving obtaining a reading from the instrument and measuring its variation from the reading obtained from a standard instrument. Calibration of an instrument also involves adjusting its precision and accuracy so that its reading come in accordance with the established standard. Calibration में अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में कुछ वेरिएशन है, वो स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती, उसकी प्लस माइनस जिसे हम ड्रिफ्ट बोलते हैं, कि अगर वेइंग वेइंग बैलेंस है और उसकी कुछ जो प्लस माइनस रीडिंग देता है उसे हम ड्रिफ्ट बोलते हैं। उस ड्रिफ्ट को हम उस प्रॉब्लम को ओवरकम करते हैं, उसको ठीक करते हैं, ताकि वो इंस्ट्रूमेंट हमारे एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ रीडिंग दे। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जस्टिफाइंग द प्रोसेस ऑफ क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन। नाउ the instrument or equipment with the known accuracy is known as standard. All the other instruments are measured against the standard. जैसे मैंने बताया आपको कि एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट होता है, वो होता है जिसकी एक्यूरेसी हमें पता है, और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स की जिनकी हम कैलिब्रेशन करते हैं उसकी मेजर्स जो करते हैं, मेजरमेंट जो करते हैं अगेंस्ट दिस स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट करते हैं। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज स्टैंडर्ड। और अलग अलग कंट्री में अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो दैट स्टैंडर्ड्स वेरी फ्रॉम वन कंट्री टू अदर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इंडस्ट्री। नाउ देयर आर टू मेन ऑब्जेक्टिव्स of calibration. First is it checks the accuracy of instrument, and second is it determines the traceability of the measurement. Next is scope or purpose of calibration. There are mainly uh, there are mainly five purpose of calibration. First is to make sure that the reading of equipment or instruments are consistent with other measurements and display the correct reading every single time. Second is to determine the accuracy, precision, reliability, and deviation of the measurement produced by all instruments. Third is to establish the reliability of the instrument being used and whether it can be trusted to deliver repeatable result each time. Next, number fourth is to map the drift as documented. Drift means वो जो एरर है, कि मैंने जैसे आपको एग्जांपल बताया था कि अगर कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वेइंग बैलेंस है, अगर उसमें कोई डिजिटल वेइंग बैलेंस है, उसमें कोई प्लस माइनस रीडिंग आती है, उसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। तो टू मैप द ड्रिफ्ट एज डॉक्यूमेंटेड, instruments have a tendency to produce inaccurate measurements over a period of time following the repeated use. Ensuring that the industry standards, quality assurance benchmarks such as CGMP, current good manufacturing practice, and government regulations are adhered to. So these five are the scope and purpose of calibration. Next is, what is instrument calibration? Instrument calibration can be defined as the process of comparing the measurements made by the instrument to be calibrated against a known measurement of either standards or an instrument known to be making measurements that exceed the acceptable limits of accuracy and precision. So this is the definition of instrument calibration. Next, usually calibration labs prefer a standard with 10 times the accuracy. But however, most regulating organizations and authority also accept a ratio 3:1 accuracy ratio. Next is
फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन, फ्रीक्वेंसी मीन्स कितनी जल्दी या कितने टाइम बाद हमें इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन करनी चाहिए या करते हैं, उसके लिए क्या शेड्यूल है। Now, how often you conduct instrument calibration mainly depends upon its tendency to drift from the true measurement and how it impacts the quality of the end product. किसी भी इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन डिपेंड करती है उसके ड्रिफ्ट पे कि कितने टाइम बाद वो ड्रिफ्ट दिखाना शो कर देता है, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन यू कैन डिजाइन ए कैलिब्रेशन शेड्यूल फॉर ईच इंस्ट्रूमेंट। द इंटरवल बिटवीन कैलिब्रेशन कैन वेरी एज, इंस्ट्रूमेंट के कैलिब्रेशन के लिए हम एक शेड्यूल बना सकते हैं, इसके लिए अलग अलग शेड्यूल्स हैं। इंटरवल फर्स्ट इज वीकली, सेकेंड इज मंथली और बाई मंथली, थर्ड इज क्वार्टरली, सेमी एनुअली और एनुअली, और फोर्थ इज आफ्टर एवरी हैवी यूजेज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जब भी कभी कोई ज़्यादा यूज़ होता है किसी इंस्ट्रूमेंट का किसी प्रोसेस में, बार बार अगर हम वेइंग बैलेंस का एग्जांपल लेके चले, बार बार उस पर आप वेइंग कर रहे हैं तो उसकी आप कैलिब्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन शुड द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बी कैलिब्रेटेड, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को हम कब कैलिब्रेट कर सकते हैं, और वी कैन से व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द calibration of a measuring instrument. So the frequency of calibrating the measuring instrument depends on a number of factors. The following is a guide outlining when instrument need to be calibrated as a part of GMP. First is as soon as you bring a new instrument, you should calibrate it before you test it out. Second is before and after you take critical measurements. Third is after any instance of electrical or mechanical shock or similar event that include a fall, bump, etc. Next is when you suspect that accuracy of measurement being produced is questionable. If there were any repairs or requalification of the instruments as per included as a part of calibration schedule, depending on the task and process, as some require calibration to be conducted before the work starts according to the manufacturer's recommendation. So these are the factors which affects the which we should consider during how to calibrate or when to calibrate a instrument. Next is commonly used calibration methods and procedure. कौन कौन से मेथड हम स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग यूज करते हैं to calibrate a instrument. There are different ways that are used to calibrate an instrument. These methods are chosen based on the desired result of the calibration and regulatory authorities requirement, just like FDA guidelines. So there are three procedures. First is standard calibration. This method is mostly preferred for calibrating instruments that are non-critical to quality or are not required for accreditation and license purpose. Use traceable standards and document its performance. Next is calibration with data. Procedures for calibration with data are similar to that of the accredited calibration. The only exception being that these procedures are not accredited to the ISO standard. Moreover, they are not accompanied by data on measurement uncertainties. And the last is ISO 17025 accredited calibration. This has to be the strictest method of calibration. Generally, it requires a measurement report which has the detail of measurements that are made against a standard of as found before calibration is started and as left once the calibration is completed. If the calibration is done by a calibration service provider, they must issue a certificate of the same. So these are the three. There are three procedures or three methods to calibrate instrument: standard calibration, calibration with the data, and ISO 17025 accredited calibration. Next is importance of regular calibration. What are the importance of regular calibration? First is
Calibration is responsible for defining the accuracy of any measurement and its quality that is recorded by an instrument. When you start working with an instrument, it must be calibrated when, thus assuring you of accurate results. However, over a period of time, you will start observing a drift. Calibration minimizes such uncertainties by assuring the accuracy of the टेस्ट इक्विपमेंट. क्या होता है जब भी हम कभी एक नया इंस्ट्रूमेंट परचेज करते हैं, हम उसको कैलिब्रेट करके यूज़ करते हैं, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब उसको यूज़ करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है तो वहाँ पे एक ड्रिफ्ट आ जाता है, शो हो जाता है. ड्रिफ्ट मतलब प्लस माइनस कुछ वेरिएशन आ जाती है रीडिंग्स में. तो कैलिब्रेशन उसको मिनिमाइज करता है और एक्यूरेसी को मेंटेन करके चलता है. नेक्स्ट इज व्हेन यू रेगुलरली कैलिब्रेट योर इक्विपमेंट, you can eliminate the drift at its budding stage instead of allowing it to grow till it affects the measurement in significant ways. Next, calibration helps in quantifying and controlling errors and uncertainties within various measurement process to a acceptable level. Next is further it helps in improving the accuracy of the measuring device, which in turn improves the quality of the end product. And the last is, in short, regular calibration allows pharmaceutical companies to have confidence in their result, which they can record, monitor, and control. Thank you.